conducting in school campus. Therefore, our chairman sir, Mr. Vikas Soni sir, is providing online classes facilities to students. Now we start our topic, class 12, subject B.st, and the first chapter of B.st is management, introduction, nature, significance and scope. It is our first chapter of class 12, B.st, management, introduction, nature, significance and scope. The first topic of chapter is meaning of management. According to R.S. Dever, R.S. Dever is a scholar of B.st and he says that the word management has been combined by three words: manage, man and team. Team means tactfully. According to R.S. Dever, मैनेजमेंट जो वर्ड है वो थ्री वर्ड से मिलकर बना है: मैनेज, मैन एंड टीम मीन्स टैक्टफुली. द वर्ड मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मैनेज, मैन, टैक्टफुली. इट मीन्स मैनेजमेंट का मीन क्या है? मैन को टैक्टफुली मैनेज करना ही कहलाएगा क्या? मैनेजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अ वर्ड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. But in narrow sense, what is management? In narrow sense, getting work done from other person to while doing himself for achieving the common goals is called management. Getting work done from other person while doing himself to achieve common goal is called management. It means management क्या है? अदर पर्सन से भी वर्क कराना एंड देन मैनेजर खुद भी वर्क करेगा. क्यों करेगा? कॉमन गोल्स को क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए. एंड इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. ठीक है. तो मैनेजमेंट का नैरो सेंस क्या है? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पर्सन व्हाइल डूइंग हिमसेल्फ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरे लोगों से वर्क कराना, दैन खुद भी वर्क करना, वो कहलाएगा क्या? मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजमेंट के इन थ्री पॉइंट्स को हम एक छोटी से डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट दिया गया है मैनेज एंड दीज आर मैन एंड टी वर्ड है टैक्टफुली. टू मैनेज, मैन, टैक्टफुली इज कॉल्ड मैनेजमेंट. मैन को टैक्टफुली मैनेज करना, मैनेजमेंट. इन नैरो सेंस, अदर पर्सन से वर्क कराना एंड मैनेजर खुद भी उसमें वर्क करेगा. देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट क्या है? अदर पर्सन से वर्क कराना एंड खुद मैनेजर भी उसमें इन्वॉल्व होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. इन ब्रॉडर सेंस, ब्रॉडर सेंस में मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस रिलेटिंग टू मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स टू कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली मैनेजरियल फंक्शंस का यूज करके वर्क करना ही कहलाएगा क्या? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट एक आर्ट है. मैनेजमेंट इज अ साइंस. मैनेजमेंट साइंस है. ठीक है. जिसमें क्या होगा? मैनेजरियल फंक्शंस को इंक्लूड किया जाएगा. मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन. और इनका यूज करके इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली वर्क किया जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके. ठीक है. आई कैन रिपीट. द वर्ड मैनेजमेंट हैज बीन कंबाइंड बाय थ्री वर्ड्स: मैनेज, मैन एंड टीम. मैनेजमेंट वर्ड जो है
वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, मैनेज, मैन एंड टीम, ठीक है। एंड नैरो सेंस में मैनेजमेंट का मीन क्या है, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर पर्सन टू वाइडन हिमसेल्फ फॉर अचीविंग द कॉमन गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। एंड इन ब्रॉडर सेंस मैनेजमेंट इज एन आर्ट and science which include managerial functions like planning, organizing, directing, coordination and controlling to achieve organizational goals. Organizational goals को complete करने के लिए managerial functions का यूज करके individually and collectively work करना ही कहलाएगा क्या, मैनेजमेंट।